Hello everyone, this is Sunil Singh from Education My Right. I'm going to cover how to crack CSAT into this video. I will give you a simple strategy. If you follow that strategy, you will be able to crack CSAT. Brief about me, I am from IIM Lucknow and I teach CSAT and few of the other topics into few coaching centers. I spoke about a process which you can use to crack CSAT. So this is where you see I have taken 4 stage process into this video and which will help you to crack CSAT. The first one is pattern analysis. Pattern. So UPSC follows a specific pattern, right? In most of the cases they will give set number of questions like 20 questions or 30 questions from this area, 10 questions from that area, and so on. So first you have to analyze that what pattern UPSC follows. Once you know the pattern, that is once you know that what are the topics which UPSC covers, then you have to understand your strength and weakness. You have to work on your strength or practice strength, and then you have to work on your weakness. But in the examination you have to fall back to your strength in case if you are not able to solve problems, or in case if you are not able to solve the questions which are coming from your weakest area. Third is the practice part. So once you know that what the pattern, which is your strength, which is your weakness, then you practice and practice. Fourth part is execute in the examination. So first you will tackle the easiest one. Once you are done with the easiest questions, then you will move to the medium complex questions, and third, which are the most complex, do not attempt them, because I will tell you why. Because you only need 33% marks, that is 66.66 marks out of 200 to qualify CSAT paper. Remember this. Even if you are topper into CSAT, that does not make any difference to your merit. So this video specifically I am making for the people who feel that they are not going to crack CSAT, right? So they remember that you have to only get 66.66 marks. Merit is not decided. Now say this, each question is of 2.5 marks, right? That is 80 into 2.5, which gives you 200, and negative is 0.833. So if you do not know a question, do not blindly attempt that. अगर ऐसा करोगे तो 0.833 चले जाएंगे. इसीलिए अटेम्प्ट तभी करो जब पता है, क्योंकि 33% मार्क्स ही चाहिए. और if you calculate how many questions will make 66.66 marks, you only need 27 correct out of 80, given that you have marked 27 or all 27 are correct. So what I would always recommend, that go for around 50 questions. Don't attempt more than 50 questions if your fear area is CSAT, and out of that definitely you will get 36 37 right, and even if the others are wrong you will easily fare through CSAT. Always play on your strength. Moving ahead, so this is our first stage where we are doing the CSAT analysis. So what I have done, that I have taken questions from 2011 to 2013, 14, 15 till 2018. I have categorized each area like maths and basic numeracy, logical and analytical reasoning, reading comprehension, decision making, data interpretation, and visual reasoning. See the pattern. Initially, your maths and basic numeracy was around 11. It increased to 31 and 28 in 2007. Then it decreased. Logical and analytical reasoning, it's more or less has been constant. Reading comprehension, it was more, now it is decreasing. See this, in 2018 it was only 26. Decision making, they have removed this now, so you can forget this. Data interpretation, 5, it was removed 2016 and 17. Now again you have 14. Visual reasoning, this is something which was recently introduced.
and this was part of bank PO examination and other examination, but now UPSC has decided to include visual reasoning also. So if you see this part, maths and basic numeracy is 18, logical analytical reasoning 16, reading comprehension 26, data interpretation 14, and visual reasoning 6, total 80. Question over the years. See this. Again, if you compare 26, this has been reduced, right? This has been newly introduced, this has been newly introduced, even though this was part of your initial few years. So this is the analysis part. If you see, bulk of the questions are coming from logical reasoning and analytical, maths, and your reading comprehension. Bulk of the question. Let's try to drill further into the topics now. And this is where strength and weakness analysis comes into picture. So comprehension, this is 27, and I have taken example from one of the papers. Okay, so out of 80 questions, I thought that I will just categorize based on that year question paper, and then we will discuss. Basic numeracy, we said 30. Then analytical ability, logical reasoning, general and mental ability, we said 23. And then this was the new section. Within basic numeracy, the first one is numbers. In numbers, out of 5 or 6, 7, whatever you get, you will definitely get 2 to 3 very easy questions. Similarly, in equation and ratio, यहाँ पे भी आसान क्वेश्चन आएगा ही. 6 में से 2 या 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे जो बेसिक रेशियो पे पूछे होंगे और बेसिक इक्वेशन पे पूछा होगा. उसे सॉल्व करना मत भूलना. परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे भी 5 में से 1 या 2 आसान क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे. एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, यहाँ भी एटलीस्ट 50% आपको आसान मिलेगा. टाइम एंड वर्क, अगेन आसान क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं. टाइम डिस्टेंस, ये भी आपको आसान मिलेगा. ये पार्ट है जहां पर आप हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल करें. ठीक है, और मैं जब आसान बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम ही आसान क्वेश्चंस आएंगे. ऑब्वियसली आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट अगर आप पिक करना शुरू करो क्वेश्चंस, लेट्स से कि मेरे पास 30 क्वेश्चंस आए हैं इस एरिया से, उसमें से आपको 10 या 12 मिल ही जाने हैं आसान क्वेश्चन. ऐसा तो है नहीं कि पूरा छोड़कर आ जाओगे, क्योंकि आप आईएएस के एग्जाम के लिए बैठे हो. अगर आप एक आईएएस एग्जाम के लिए बैठे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही. तो इसीलिए आप अगर अपना बेसिक्स भी करेक्ट रखते हो तो इन सारे सेक्शंस में से आपको पक्का 30 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें से 12 या 13 तो आपको मिलने ही है जो आसान है. ठीक है, 12 या 13 मान के चलो, कुछ नहीं तो 10 तो मिलेंगे. चलो हम मान लेते हैं कि आप यहाँ से 10 करने वाले हो. ठीक है, इस एरिया से इसको आप भूल सकते हो, इसको आप भूल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जो कंफर्टेबल नहीं होते. बट इन सबको आप एटलीस्ट बेसिक्स तो प्रिपेयर करके जाओगे ही जाओगे. ठीक है, चलो हमने मान लिया कि यहाँ से आपने अराउंड 10 क्वेश्चन सही कर दिया है. सही कर दिया है, हो सकता है कि आप 2-3 गलत भी करोगे. ठीक है, अब आते हैं हम लोग एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी. मेरा ये स्ट्रेंथ है, मेरा ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, और इसमें से मेरे कभी गलत नहीं होते. इसीलिए मैं, और बिलीव मी, दे आर द मोस्ट इजीएस्ट सेट ऑफ टॉपिक्स फॉर एनी पर्सन. मतलब कि किसी भी बैकग्राउंड से हो, ही और सी कैन डेफिनेटली क्रैक दीज क्वेश्चंस. इसमें कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, विल डिस्कस दैट, बट यू विल बी इजीली एबल टू क्रैक. हो सकता है ऊपर वाले सेक्शन में आप कहीं फंस भी जाओ, लेकिन नीचे अगर आप थोड़ा भी ढंग से प्रिपेयर करते हो ना तो आप उसको कर सकते हो. तो इसीलिए मैं फर्स्ट वाले से 10 मान रहा हूँ. सेकंड वाले में देखते हैं. डायरेक्शन क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. इसमें डायरेक्शन दिया रहेगा कि यहाँ से यहाँ मूव किया, वहां से इस डायरेक्शन में गया, अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पे कितना है. तो इसीलिए इसमें से 3 में से तो 2 आपको करना ही करना है. डिस्ट्रीब्यूशन, इसके 2 सेट्स आते हैं. इसमें ऐसा रहता है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी से दैट देयर आर 5 or 6 people, each one is wearing a different color of hat, different color of shirt, and so on. And then finally they will ask you who is wearing what, something like that. So how we solve? We create tables, and within table we start putting the name, and then we put who is wearing what, and then finally we try to answer that. इसमें से 2 सेट में से you can easily answer one set. One I think you should be able to. Coding, decoding.
This one you may or may not. I'm putting, let's say you will not be able to. Critical reasoning, inference, conclusion, assumptions. If you are good with inferences, in the sense that if you are able to read and comprehend those words, you will be able to answer this. Let's say I'm saying that you are able to do one. Cubes, again, in the cubes part, they will say, they will give a cube, they will maybe tilt it, they will paint it, something like that, and then they will say that how many cubes are there, or how many smaller cubes, or how many sides are painted, and so on. अरेंजमेंट, ये तो छोड़ना ही नहीं है, मिस नहीं कर सकते. अब आओ क्वांट बेस्ड रीजनिंग पे. चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि क्वांट हो सकता है इसमें कहीं पे, और कई बार आंसर नहीं कर पाओगे, दो में से एक ही किया. लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है? वी से दैट 6 or 8 people are sitting in the same line, then third from top, the second one is the highest, third one has the lowest height, and so on. And then we say that at what position this person is there, and क्वेश्चन ऐसे ही होता है. और इसमें आप मुझे बिलीव करो, आप 3 का 3 आंसर ये कर सकते हो. और मिसलेनियस बातें चलो हम छोड़ देते हैं. तो इसमें से आपके कितने क्वेश्चन बने? 2 3 4 5 6 7 8 9, अराउंड 9 बन गए. तो आपके 19 तो बन गए हैं यहाँ पे, ठीक है, 10 और 9. कॉम्प्रीहेंशन, ऐसा तो है नहीं कि यू लीव दिस कॉम्प्रीहेंशन, राइट? You will be able to comprehend some or the other passage. So out of 27, even if you, let's say, do 10 also, then you are at 29 question. But 29 जो है आपका border line हो जाता है. इसीलिए I would say that you have to attempt around 50, 48 to 50. और उसमें से अगर मान लो आपका 10 गलत भी हो जाता है, then also you will be easily able to clear it, right? Clear the examination. If you are so confident, you can attempt only 35 or 37. Out of that, your 32, 33 will be correct, and you will still fare through. But होता क्या है कि जैसे कॉम्प्रिहेंशन वाले जो पार्ट है, कई बार यू विल नॉट बी एबल टू 100% say that this is correct or not correct. That is why I say that you attempt around 45 to 50. Out of that, even though 5 are wrong, you will be able to do that. लास्ट सेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड विजुअल रीजनिंग. विजुअल रीजनिंग अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इसीलिए आपको ये भी देख लो आप, ठीक है. और ये पहले नहीं आया करता था, आ जाता है. डेटा इंटरप्रिटेशन अगेन इजी होता है, इसमें सिंपल ग्राफ दिए रहते हैं. अगर आपने बेसिक मैथ्स कर लिया तो आप इसको हैंडल कर ले जाओगे, ठीक है. स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस आ गया है. अब आते हैं, आपका नेक्स्ट क्या है? आप प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद से एग्जीक्यूट करोगे. ये तो हो गया 4 का प्रोसेस. नाउ फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम. बुक्स, there are many books in the market. I would say you can go through Arihant Prakashan. You will be able to answer most of the questions from this. The basic, whatever understanding you need, you will be able to get it from here. Practice last 6 years, at least last 6 years question paper. Once you are done with that, you have solved that, at least 60 to 70% of the questions will repeat. When I say repeat, it does not mean that directly they will repeat. It means that the basic formula behind solving those questions will be same. Never underestimate your skill or never underestimate UPSC. When I say your skill, ये मत सोचो कि मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है. वहां जाओ, अटेम्प्ट करो, पास हो गए ही हो गए. When I say never underestimate UPSC, see this, ये इस बार UPSC ने लाया था. हम सोच भी नहीं सकते थे कि UPSC कुछ ऐसा करेगा, ठीक है. इसीलिए यूपीएससी को अंडरस्टिमेट मत करो. आज के दिन में बोल रहा हूँ कि ये आ सकता है, कल हो सकता है कुछ नहीं आए, पता नहीं यूपीएससी कुछ बदल ही दे, ठीक है. 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग हटा के कोई और ला दे. बट डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि आप हर चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते हो, ठीक है. फॉलो व्हाट इज द करेंट पैटर्न एंड होपफुली और श्योरली यू विल पास इट. फाइनली, एग्जाम से पहले अच्छे से सो के जाओ. होता क्या है कि पेपर 1 कभी कभी थोड़ा खराब चला जाता है ना, तो हम पेपर 2 में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. ऐसा मत होने दो. इवन दो यू आर नॉट एबल टू 100% श्योर दैट पेपर 1 हैज बीन गुड एंड यू विल डेफिनेटली पास, but at least do your paper 2 also in a good at having a good attitude and try to pass that, so that in worst case if you are passing paper 1, it should not be the case that you have failed paper 2, right?
So what I would say that if you have any questions related to CSAT, post in the comment section of my channel, and I will be replying to your queries positively, right? So this is where I close this video. Please do share, subscribe, and like. Thank you. Thanks all.